ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची वो बिजनेस फोरम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। दोनों प्रधानमंत्री, ये फोटो आप, और बिजनेस फोरम में जो प्रदर्शनी लगी है उसका भी अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें। जैसा कि आप जानते हैं कि जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 3 दिनों के आधिकारिक दौरे पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची थी और जो 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन है उसमें विशेष रूप से हिस्सा लेने के लिए जापान की प्रधानमंत्री आई हैं। आज ही इस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन, और दोनों नेता भारत जापान की जो विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है उसकी समीक्षा करेंगे। साथ में बिजनेस फोरम जो है जिसमें करीब करीब 150 से भी ज़्यादा प्रमुख उद्योगपति शामिल हो रहे हैं, उसमें भी दोनों नेता, दोनों प्रधानमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। उससे पहले प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस बार की जो भारत और जापान के बीच वैसे तो संबंध काफ़ी प्रगाढ़ हैं, आर्थिक, व्यापारिक, दोनों रणनीतिक, हर तरह से संबंध दोनों देशों के बीच बहुत ही प्रगाढ़ हैं। एक लंबा इतिहास रहा है दोनों देशों के संबंधों का। इस बार की बैठक में आर्थिक सुरक्षा, मजबूत सप्लाई चेन, सेमीकंडक्टर, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, निवेश, महत्वपूर्ण खनिज, ये कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर सहयोग दोनों देशों के बीच बढ़ाने पर जोर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये देखिए प्रदर्शनी का जो अवलोकन किया है उसकी कुछ तस्वीरें आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर। 3 दिनों के दौरे पर जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची आई हुई हैं और आज ही जो 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन है उसमें दोनों प्रधानमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। और ये जो बिजनेस फोरम की बैठक है, प्रदर्शनी का अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए, जिसमें जो क्षेत्र हमने बताए उस क्षेत्र से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी कंपनियां उन्होंने अपनी प्रदर्शनी लगाई है। और जापान को तो जो टेक्नोलॉजी है उसके विकसित टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए, और ये जो प्रदर्शनी है, आप जैसा जानते हैं कि जैसा हम बता चुके हैं कि भारत जापान बिजनेस फोरम उसकी बैठक है। बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री और ये साथ में जापान की प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए, और जो कंपनियां हैं जापान की नामी गिरामी कंपनियां, 150 से भी ज़्यादा जो सीईओज़ हैं और जो कंपनियों के प्रमुख हैं वो इस बिज़नेस फोरम में शामिल हो रहे हैं। 150 से ज़्यादा उद्योगपति, और जाहिर सी बात है कि इसमें निवेश और कारोबारी साझेदारी दोनों देशों के बीच बढ़ाने पर चर्चा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की इन कंपनियों के प्रतिनिधियों से वहाँ की तकनीक के बारे में, वहाँ की तकनीक बहुत ही विकसित मानी जाती है। जापान दुनिया भर में एक लीडर के तौर पर देखा जाता है विकसित तकनीक के मामले में। Ladies and gentlemen, distinguished guests, good afternoon and welcome. We are delighted to begin the Japan-India Joint Economic Forum here in New Delhi, India. My name is Haruka Maruyama, Senior Director of JETRO New Delhi. I have studied at IIT Guwahati under the Joint Degree Program, and I am truly honored to moderate this forum connecting Japan and India. To begin, please welcome Mr. Norihiko Ishiguro, Chairman and CEO of Japan External Trade Organization, JETRO, to deliver the opening remarks and MOU announcements. Okay. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, Honorable Prime Minister of Japan, Ms. Sanae Takaichi, Excellency, distinguished guests, and ladies and gentlemen, a very good afternoon to you all. Namaste. I'm Norihiko Ishiguro, Chairman and the CEO of JETRO. It is a great honor for us to host this India-Japan Joint Economic Forum today in the distinguished presence of the Honorable Prime Ministers of India and Japan. Japan-India economic relations are now at an unprecedented high level. According to JETRO's survey, more than 80% of the Japanese companies operating in India are planning to expand their local business going forward. Today, we are pleased to announce 129 MOUs between Japan and India. Since the Japan-India Summit meeting held in August last year, investment in India has gained strong momentum, reaching approximately 2 trillion Japanese yen in new investment over the past year alone. Scope of these investments has expanded into advanced fields such as semiconductor, AI, quantum technology, while cooperation has also deepened in the area, including large-scale investment in clean energy such as green ammonia. We are confident that these developments will further accelerate business engagement between two countries. JETRO remains wholeheartedly committed to promoting Japan-India business relations. We sincerely hope that today's forum will open new and important avenues to further expand our economic ties. Thank you very much for gracing today's event with your presence. Thank you.
Thank you very much, Mr. Ishiguro. Next, please welcome Mr. Tatsuo Yasunaga, Chairman, the Japan-India Business Cooperation Committee and Chair of Committee on the South Asia Keidanren, to deliver his remarks. ありがとうございます。ナレンドラ・モディインド共和国首相閣下、高市早苗内閣総理大臣閣下、 Her Excellency, ご列席の皆 Prime 様、 Minister of Japan, Takaichi 本日は Sanae, このような機会をいた dear だき、 everyone present 経 here, 済界を代表して I ご am 挨拶 honored 申 to し上げ receive ま the す。 opportunity to speak a 現 few 在、 words 世界で as the representative of the 対立 business と world 分 of 断が深ま Japan. り、 In the present world, there is a deepening of confrontation and separation, and as a consequence, so in this world, which is divided, and the international world is greatly shaken, and therefore, from such a situation, it is very important for Japan to strengthen the partnership with the global South. Within that also, India stands as a special strategic global partner for Japan and holds an indispensable position in the realization of the Indo-Pacific, free and open Pacific, Indo-Pacific. It is necessary that both India and Japan, by utilizing their respective strengths, embark on the road to economic growth as well as contribute towards the strengthening of the international economic system based on a legal order on the basis of cooperation with other countries such as African nations. Today, the fact that such a large number of representatives of Japanese companies are present here on the occasion of the visit of the Honorable Prime Minister of Japan, Takaichi Sanae, is the first step in that direction, and therefore, in my opinion, is an extremely very significant event. And under the guiding idea of Make in India, Make for the World, postulated by the Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, by integrating the technological power and quality control management of Japan with the growth potential of India, one can look forward to the economic growth of not only India, but Africa and Middle East as well, and with that, opening up of the global markets. In reality, there are already developments in the direction of cooperation in the new areas of semiconductors. Approximately 1,400 Japanese companies have a strong presence in India and registered many success stories, but there are still many areas which are still available and opportunities of cooperation. From now onwards, it is important to expand extensively a variety of areas of cooperation, including in the fields of medium and small-scale industries. In addition to that, from the viewpoint of the economic security, cooperation in the important areas of semiconductors, AI, critical minerals, green energy, they are required to be strengthened. And along with that, we, as a business world, we continue to work in the direction of realization of the goal of an investment of 10 trillion yen in the next 10 years, as well as exchange of human resources to the tune of 500,000 people. This is what we plan to do. Today's forum is therefore expected to provide an opportunity to further deepen the relationship between India and Japan and open up a new horizon of cooperation. With these words, I would like to conclude my brief introductory remarks on the occasion of this India-Japan Economic Forum. Next, Thank you. Please welcome Mr. R. Mukundan, President of CII and Managing Director and CEO of Tata Chemicals Limited, to deliver his remarks. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Your Excellency, Madam, Honorable Prime Minister of Japan, Sanae Takaichi, Excellencies, distinguished ministers, ladies and gentlemen, good afternoon. I'm indeed deeply honored to be at this forum in the esteemed presence of our two countries' leadership. I eagerly look forward to your distinguished addresses on shaping the future course of India-Japan bilateral relations. From the industry and business communities of India and Japan, we express our gratitude. India and Japan today share a special strategic and global partnership founded on mutual trust, shared democratic values,
and a common vision for a free, open, and prosperous Indo-Pacific. Our partnership is steadily expanding across economic, technological, strategic domains, making it one of the most enduring and forward-looking bilateral relationships. Thank you, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, for leading us to this relationship spread over many, many years. India and Japan partnership is anchored in 8 key pillars, including economic partnership, economic security, technology and innovation, sustainability, mobility, health and people-to-people exchange, and state of perfecture cooperation. The meetings of both our leaders have enabled us in business to advance collaboration in priority areas such as digital transformation, critical minerals, space, energy, and human resource development. Ladies and gentlemen, the CII has maintained long-standing engagement with Japan through sustained business interactions, institutional partnerships, and industry platforms, including JETRO, JICA, Kaidan-REN, and JBIC. Some thoughts, Your Excellencies, Honorable Prime Ministers, for your consideration for furthering the opportunities for collaboration and cooperation, to especially facilitate investments and joint venture partnerships. First, there is a significant scope to open up because India and Japan Clean Energy Partnership further. Building on this, we deepen cooperation in electric mobility, battery storage, green hydrogen, carbon capture technologies, and renewable energy systems. Excellencies, we would like to establish a structured India-Japan Clean Technology Working Group under IGBLF to further these ideas and projects. Second, a strategic opportunity lies in expanding India-Japan Digital Partnership 2.0, particularly in emerging technologies such as AI, robotics, quantum computing, and advanced manufacturing. Here, India's strong IT ecosystem and talent base can complement Japan's technological leadership. As CII, we would continue to play a bridging role by connecting innovation ecosystems, facilitating venture partnerships, and supporting adoption of Industry 5.0 and smart manufacturing solutions. We would work on entire spectrum, more especially with our MSMEs. Third, skill development has been a key pillar of our partnership, supported by initiatives such as Technical Internship Training Program, TITP, and Specified Skill Worker Framework. We have facilitated from CII over 800 placements, and we see strong potential to scale this further through structured industry partnerships and targeted skill program aligned with future technologies. We shall further deepen this. We keenly look forward to your guidance of both our leaders. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Mukundan. Now, it is my pleasure to introduce the inauguration of Maruti Suzuki new facility in Calcutta. Now, I invite the Representative Director and President, Suzuki Motor Corporation, Mr. Toshihiro Suzuki, to share his thoughts. Your Excellencies, Prime Minister Shri Narendra Modi, and Prime Minister Ms. Sanae Takaichi. Namaskar. Konnichiwa. It is a great honor for us as you inaugurate our most advanced car manufacturing factory at Calcutta, Haryana. From current capacity of 500,000 units, the plant will be further scaled to 1 million units, making it one of the largest car plants of the world. It is, thank you. It is a testament to the success of India-Japan partnership and Make in India initiative. With favorable policy environment under Prime Minister Mr. Modi's leadership, Suzuki is accelerating investments, employment, export,
and technologies towards Viksit Bharat journey. Dhanyawad. ありがとうございました。Now, it is my honor to invite the Honorable Prime Ministers of both nations to inaugurate our Calcutta vehicle manufacturing factory. Congratulations, Maruti Suzuki, on this remarkable achievement. Next, it is my great honor and privilege to invite Ms. Sanae Takaichi, Honorable Prime Minister of Japan, to deliver her remarks. Honorable Prime Minister, the floor is yours. モディ首相、そして日印、両国の産業界の皆様、こんにちは。本日、日本を代表する150社以上の企業の皆様と共に、このデリーの地で、こうやってお会いできること、大変よろしく思います。able to participate here, feel very happy to do so. In 2007, the then Prime Minister Shinzo Abe delivered his historic speech, The Confluence of the Two Seas, here in India. In that address, he presented a visionary concept linking the Pacific Ocean and Indian Ocean as the seas of freedom and prosperity. This, India is the very place where the vision of today's free and open Indo-Pacific was born. Today, as the world enters in an era of profound challenges marked by the rise of protectionism, economic coercion, and growing geopolitical tensions, it has become essential to strengthen regional autonomy and resilience. With this in mind, in May this year, I proposed a further revolution of FOIP founded on the ground principles of growing stronger and more prosperous together. This vision, centered on the twin principles of autonomy and resilience, also resonates deeply with Prime Minister Modi's Mahasagar initiative. As the two leading democracies supporting the region, Japan and India will further deepen their cooperation to uphold the rule of law, stand firm against every form of coercion, safeguard freedom, create prosperity, and together shape the future. Among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important area. At the recent G7 summit, I presented three proposals to strengthen energy security, ensuring free and transparent energy trade, enhancing strategic energy stockpiles, and promoting cooperation between producing and consuming countries. Through the Power Asia initiative, we are working to translate this vision into concrete action to ensure going forward Japan and India will jointly strengthen regional energy security through new areas of cooperation, including enhanced petroleum stockpiling. This initiative is founded upon that very vision. In addition, Japanese and Indian companies will jointly advance a green ammonia production project with an annual capacity of approximately 4 lakh tons. I sincerely hope that this project will become a symbol of new chapter in energy security cooperation between our two countries.
Further, my attention has been drawn to the vast biomass resources available in India's rural areas that remain largely underutilized. These include cattle dung, rice straw, sugarcane residue, and other agriculture biomass. In fact, this is not a new idea. For many years, Prime Minister Modi has promoted a vision of converting rural resources into energy by harnessing the strength of cooperative institutions. I firmly believe that this vision holds the key to opening a new future for both rural development and energy security in India. Based on this shared vision, Prime Minister Modi and I have agreed to launch the Japan-India CBG initiative as a new joint project through cooperative institutions. This initiative will promote the production of energy from cattle dung and other biomass resources in the form of compressed biogas, the CBG. We have agreed for biogas generation. Through the letter of intent signed today, we should jointly create a market of approximately 2.5 million CNG vehicles powered by this biogas. Our cooperation is no longer confined to the energy sector alone. The scope of this partnership continues to expand, and the range of stakeholders involved is becoming increasingly diverse, encompassing startups as well as small and medium enterprises. On this occasion, we are pleased to announce approximately 129 private sector cooperation agreements. Together with these investments exceeding 2 trillion Japanese yen. Today, an increasing number of Japanese companies are using India as a base for expanding their engagement with Africa. Under the framework of the FOIP, we will extend this new model of growth developed by Japan and India to countries across the global south, including Africa, Asia, and Latin America. By joining forces, Japan and India will pursue the shared vision of growing stronger and more prosperous together. Guided by this principle, our two countries will work together to shape the future of the Indo-Pacific as well as global south. Let's work together. Thank you very much for your kind attention. Thank you very much, Honorable Prime Minister. Next, it is my distinguished honor to invite Shri Narendra Modi ji, Honorable Prime Minister of India, to the stage. Honorable Prime Minister, the floor is yours. Your Excellency, मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाईची जी, दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स, नमस्कार, कोनिचिवा। भारत जापान जॉइंट इकोनॉमिक फोरम में आप सभी के बीच आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप में से कई कंपनियां भारत के साथ लंबे अरसे से जुड़ी हैं, कुछ तो 100 साल से पहले से हैं, और जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण हैं। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है। प्रधानमंत्री ताकाई जी, मुझे बताया गया है कि आपको मोटर बाइक का बहुत शौक है।
हमें बहुत खुशी है कि कावासाकी, यामाहा और होंडा की बाइक्स भी भारत में आज विश्व भर में एक्सपोर्ट होती हैं। इसी तरह एयर कंडीशनर हो या पावर ग्रिड इक्विपमेंट प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग हो या मेडिकल टेक्नोलॉजी, जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती हैं तो पूरी दुनिया को फायदा होता है। फ्रेंड्स, आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, when the going gets tough, the tough get going। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलॉसफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। कुछ ही महीने पहले हमने टैक्सेशन, गवर्नेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स किए। हम हर क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल रहे हैं और कई महत्वपूर्ण सेक्टर्स में इंसेंटिव दे रहे हैं जिसका लाभ आप सभी उठा सकते हैं। और यही कारण है कि लगातार पिछले 4 वर्षों से जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन JBIC का सर्वे दिखाता है कि भारत जापानी बिजनेस के लिए मोस्ट प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन रहा है। आज मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं, मेरा ऑफिस यानी PMO का दफ्तर एक डेडिकेटेड जापान बिजनेस वीक का आयोजन करेगा। इसमें PMO के वरिष्ठ अफसर आपके साथ विचार विमर्श करेंगे, बैठेंगे, आपकी समस्याओं को समझने के लिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बढ़ाने के लिए आपसे खुले मन से चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, आज प्राइम मिनिस्टर ताकाइची और मैंने अपने साझेदारी को और भी गतिशील और गहरा करने का निर्णय लिया है। हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी, AI, डिफेंस, हेल्थ जैसे अनेक विषयों पर एग्रीमेंट किए, जिससे यह पार्टनरशिप फ्यूचरिस्टिक और लिमिटलेस बन जाएगी। हमारी सरकारों के बीच स्ट्रैटेजिक सिनर्जी है, कॉन्फिडेंस है और सबसे बड़ी बात क्लैरिटी है। अब इसे आउटकम्स में बदलने की जिम्मेदारी आप सभी पर है। फ्रेंड्स, आप सबको मिलकर यह सुनिश्चित करना है कि अगले 1 दशक में जापान से भारत में निवेश 10 ट्रिलियन येन के टारगेट को भी पार करे और भारत में जापानी कंपनीज की संख्या भी 10 वर्ष में डबल हो जाए। फ्रेंड्स, मैं आपके समक्ष एक विजन रखना चाहता हूं। मैं एक ऐसा विश्व देखता हूं
जहां जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का मार्केट पोटेंशियल मिलकर सेमीकंडक्टर, फार्मा और क्रिटिकल मिनरल्स में दुनिया को रिजिलिएंट सप्लाई चेन प्रस्तुत दे, जहां जापान का कैपिटल और भारत की एम्बिशन मिलकर शिप बिल्डिंग, मोबिलिटी और क्लीन एनर्जी में नई ग्लोबल लीडरशिप तैयार करे, जहां भारत और जापान के स्टार्टअप से एआई, क्वांटम और बायोटेक में विश्व के नेक्स्ट जनरेशन सॉल्यूशंस आए और एरोस्पेस और डिफेंस में अभूतपूर्व सहयोग से हम ग्लोबल सिक्योरिटी में योगदान मजबूत करें। फ्रेंड्स, आइए ट्रस्ट और ऑप्टिमिज्म से भरी इस साझेदारी से म्यूचुअल ग्रोथ और ग्लोबल गुड का मार्ग प्रशस्त करें। जैसे टोयोटा वाले कहते हैं, आइए मिलकर लेट अस गो प्लेसेस। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, Honorable Prime Minister. Ladies and gentlemen, may I kindly request your attention as their excellencies will now depart the venue. May I kindly request everyone to remain seated and join us in a huge round of applause as they take their leave.